Good day, everyone. Hope so. You all are having a very good health. I'm Rami Narshad, and I'm going to give you an overview of the production operations management. And the book we are following is by Hazer, Rinder, and Chuck Munson, and we are using 13th edition so far. So when we see the course description of the production operations management, it will include the 10 management functions or the decision functions of the POM. First is the scheduling, then how we are maintaining, then there would be inventory management, then how we are managing our supply chain in terms of designing goods and services. It is not only enough to design a good, it is also necessary to design a services as well. Then how we are managing our process and the capacity design, like how much we are producing and how much we have to produce in the mean amount of time. And about the job designing, and that includes the job description and specification and our staff, then layout designing and strategy, and the location strategy in terms of the red and blue ocean. So we'll be seeing the manufacturing industries, banks, hospitals, and pharmaceuticals, like how these all the 10 decisions of the operations management fall in these categories. There would be restaurants and in the airlines, schools and universities and transportation companies and construction and software projects, IT and so for what is operations management, basically it is a set of activities that create value in the form of goods and services by transforming the inputs into outputs. Like basically we are having certain materials, people, equipment, raw material, intangible needs, operations, direct or indirect cost, or the information. And what we are producing on the other hand, that would be like tangible goods, fulfill request in the form of services if we are having in the form of information, and most importantly, that we are dealing with the customer satisfactions. Basically we are meeting the customer's demand, and we have to exceed the customer's demand. So that is why we are doing all the operations. See the essential functions of the firm, that includes the marketing. If we are not letting the world know that what is the type of product we are producing, or the what are the type of services we are giving, it will not add value to the product. So we have to market the product, so to let the world know in the term of production and operations, how we are like managing our assembly lines, how we are managing our operations in the terms of finance and accounting, how we are planning our capital, and how we are making a record of that in the form of like a debit entries, credit entries, and so on. And in terms of human resource, how we are managing our labor, how we figure the roles and responsibility of the staff, and it includes the basic levels of the management, and like the appraisals, self appraisals, or the supervisor's appraisal, and how much the benefit we are giving to the employer. This is an example of the commercial bank, like how the operations are being conducted in the form of basically when you used to enter into the bank, आप देखते होंगे कि वहाँ पे टेलर मशीन्स हैं, ये scheduled टेलर मशीन्स होती हैं. आप वहाँ से टोकन लेते हैं, then you have to wait for your specific counter that your token should be appeared. And after जब आपका टोकन appear होता है कि आपको स्टेशन पे मूव करना है, तो जाते हैं आप अपने जो भी आपके नई सर्विसेज लेनी होती हैं, आप उनको बताते हैं और वो आपको फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है, तो लाइक इट इज़ लाइक इन एवरी डोमेन कि आपके पास जो प्रोडक्शन ऑपरेशंस हैं वो रन हो रहे होते हैं. ठीक है, फिर आप फाइनेंस में क्या जाते हैं, मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, कमर्शियल बैंक्स की लोन्स आप ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, काइबर है आपके पास. एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में कि लाइक अगर आपके पास है कि लाइक हमें टेम्परेरी चाहिए, रेगुलर चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल चाहिए,
तो उसका क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या वेज एंड सैलरी है पर क्रेडिट और आपको कितना मिल रहा है, एंड द पर्सनल रिकॉर्ड लाइक यहाँ पे जो आपके पास पर्सनल है विद द ईएल, ये जो ह्यूमन रिसोर्स की लास्ट कैटेगरी, इट इज़ लाइक फॉर द स्टाफ रिकॉर्ड। अगर यहाँ पे पर्सनल होता ए के साथ तो वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड था, बट यहाँ पे पर्सनल है, दैट इज़ फॉर द स्टाफ रिकॉर्ड। फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, वहाँ पे स्केजुलिंग के आपके पास जिस तरह गैंट चार्ट्स होते हैं आपके पास, की प्रॉपर स्केजुलिंग होती है, और कि आपने 2 मंथ्स में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ये ऑटोमेशन होती है, बताता है लाइक आइदर यू आर 1 डे बिहाइंड द स्केजुअल, आर यू आर 1 डे लीडिंग द स्केजुअल। तो आपने अपने ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे अपने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है और कंट्रोल करना है, और डिफरेंट इसमें जो फाइनेंस है लाइक अपने अपने स्टॉक मार्केट्स को अपने कैसे मैनेज करना है, कैसे रिसीवेबल्स को देखना है, जो भी आपके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उनके ऊपर डिविडेंड कैसे देना आपने, लाइक जब आप लेते हैं लोगों से पैसा किसी कंपनी को रन करने के लिए, तो आपके पास इक्विटी फाइनेंसिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स आता है, लेकिन जब आपके पास प्रॉफिट आ जाता है तो वो फिर डिविडेंड के फॉर्म में आप उनको रिटर्न करते हैं। फिर मार्केटिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द की फंक्शन के लोगों को पता चले कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और अपने ऑपरेशंस मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है। देखिए आपके पास प्लांट मैनेजर है तो प्लांट को देखेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर है तो प्रोजेक्ट को देखेगा, बट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट तो उसके लिए ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस आते हैं जिसमें प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग, इसमें सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, डायरेक्ट करना, लीड करना। बेसिकली ये डायरेक्टिंग एंड लीडिंग दे यूज टू कम साइड बाय साइड, बट डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिव में डिफरेंस होता है। सपोर्टिव में यू बेसिकली पार्टिसिपेट विद इन द टीम टू अचीव दैट गोल। देन फिर आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अरेंज करते हैं, रिपोर्ट करना, बजटिंग। बेसिकली जो पहले आपके पास इंडिया फॉइल के मैनेजमेंट फंक्शंस थे, they were only linked with the planning, organizing, staffing, directing and controlling, but अब उन्होंने रिपोर्टिंग एंड बजटिंग को दिया है, रीडिफाइन किए हैं मैनेजमेंट फंक्शंस को। आप देखते हैं लाइक ये जो चीज़ें हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में स्टार्ट किया था कि आपके पास 10 मैनेजमेंट जो डिसीजंस हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, इसमें क्या आपने डिज़ाइन करना है, क्वालिटी को आप कैसे मैनेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें क्वालिटी एश्योरेंस आता है, क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्वालिटी एश्योरेंस में आप अपने प्रोसेसेस की क्वालिटी को अच्छा करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने प्लान्स प्रोसीजर्स को अपना मॉडिफाई करके, एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन से। फिर आपके पास प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन है कि आपने अपने प्रोसेसेस को डिज़ाइन करना है। यू कैन यूज़ JIT, कैनबैन, काइजन जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के हैं। फिर कैपेसिटी डिज़ाइन आपने बेंचमार्क करना है कि आपने पर डे इतना प्रोड्यूस करना है। फिर लोकेशन स्ट्रेटजी के आपने अपनी जो कंपनी वो कहाँ पर खोलनी है, या आपने अपने ऑपरेशंस कैसे रन करने हैं। फिर द लेआउट स्ट्रेटजी, बेसिकली लेआउट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है कि आपने बेसिकली हर चीज़ का लेआउट बनाना होता है। HR एंड जॉब डिज़ाइनिंग को हमने डिस्कस किया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपके पास जो सप्लाई चेन के की प्लेयर्स आते हैं, फ्रॉम द सप्लाई, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, कि आप इनको कैसे मैनेज करना है, कि इधर अगर जो सप्लायर है वो भी किसी और से ले रहा है, दैट वुड बी द Tier 1 Tier 2 सप्लायर। फिर आपने अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एंड बफर इन्वेंट्री। बेसिकली जो आपके पास बफर इन्वेंट्री दैट इज़ ऑफ द फिनिश गुड्स, एंड द सेफ्टी इन्वेंट्री आपके पास होती है दैट इज़ ऑफ द रॉ मटेरियल। दैन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आती है, मटेरियल्स की आपने कैसे मैनेजिंग करनी है। जस्ट इन टाइम आता है स्केजुलिंग बाय डूइंग or implementing GAD practices, and in the form of Oracle, Primavera P6 as well. And the maintenance is basically the crux of that. If we are not maintaining our operations, rather it is the goods and services, then basically we are using the reactive approaches कि अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम करेंगे, लेकिन जो आपके पास मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं
मेगा कंपनीज होती हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, लाइक बिफोर एंड आपको प्रॉब्लम का पता हो या लास्ट ईयर आया था तो आपने इस टाइम उसको पहले से ही रेडिकेट कर देना है। की एरियाज जो अभी हमने डिस्कस किया है, डिज़ाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैनेजिंग क्वालिटी, प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिज़ाइन के हैं, लोकेशन के कैसे अपनी फैसिलिटीज़ को पुट करना आपके पास, लेआउट में कि आपने कैसे अरेंज करना है, लाइक एज आप डिपिक्टेड अर्लियर कि लेआउट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। देन एचआर आता है आपके पास, स्टाफिंग की बात आती है, सप्लाई चेन की प्लेयर्स हैं कि आपने मेक एंड बाय एनालिसिस करना है, like either you are making the product in house or you are outsourcing it, तो इसमें basically in source and outsource का concept है। इन्वेंट्री मटेरियल मैनेजमेंट आता है, जेआईडी के आपने कितना रीऑर्डर करना है, कब इमीडिएट एंड द शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग। बेसिकली आपके पास जो इमीडिएट होते हैं शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग, इट इज़ फॉर द मिशंस। जब आपके पास मिशंस आती हैं तो आप लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग करते हैं, लाइक यू मेक अ स्केड्यूल ऑफ योर कंपनी ऑफ next 20 or 30 years, but in terms of a short term scheduling, minimum it is 3 plus, okay, like minimum it would be 3 and 3 to 5 years। मेंटेनेंस आता है, उसमें आपकी रिलायबिलिटी देखते हैं, वैलिडिटी देखते हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस के लिए। देन व्हाट आर द ऑपरेशन, मतलब आफ्टर गेटिंग द स्पेशलाइजेशन तो आपको कौन सी ओएम की जॉब्स मिल सकती हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और इट वुड बी लाइक क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर इन टर्म्स ऑफ लाइक फैसिलिटी स्ट्रेटेजिक इश्यूज के अपने रिस्पॉन्स टाइम को कैसे मैनेज करना है, टीम डेवलपमेंट कैसे है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर रन करना आने होने चाहिए, क्वालिटी के लाइक इन टर्म्स ऑफ के इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट की आप टीम में आ सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन टीम में आ सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ओवरऑल देखना होता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। सो जो लास्ट टाइम हमने ये लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, ये जॉब टाइटल्स हैं जो कि आ सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स अवेलेबल हैं, यू मे सर्च ऑन दैट इन योर फिजिबल